Good morning, my dear respected students. And today we are here again to discuss topics of computers. And my dear respected students, what we are going to do here, kindly concentrate. It says that we are just begin with discussing the syllabus of a periodic test 2. And my dear respected students, thank you very much. Two students are entering with one name. Yes, I know. No issues with that. Hiyaji and Jia, sorry, not Hiya, Jia and Bhardwaj sir. Okay, no issues with that. We can also call it as a half yearly. मेरा बेटा जी कृपया करके ध्यान एकाग्रचित कीजिए. Otherwise, the syllabus is already provided by your class teacher to you, I think so. Now we are just going to discuss the concept from July to September. मेरा बेटा, July to September we have discussed thing. And now what we are going to do here, we are just going to complete chapter number or lesson number 3, lesson number 4 and lesson number 5. Mera beta, it's my humble request and kindly concentrate here. Kindly concentrate here. This is the chapter. This first one is the chapter which is to be considered as a theory portion only. And now rest of these two, that is a lesson number 4 and lesson number 5, my dear respected students, this is to be considered as a practical questions. Mera puttar, this is to be considered as a practical questions, or we can call all the questions from these two chapters is to be considered as a practical, because this is somewhere belongs to a programming. So a little bit efforts is required, little bit concentration is also required. So I think so that you all are supposed to concentrate. And this is the distribution of marks. Which says that written from 30 and practical will be 20 and total will be 50 in case of any change, because the time is very uncertain. So in case any kind of modifications or changes will be required, the same will be intimated to you when required. ठीक है मेरे बच्चों, कृपया करके ध्यान पे एकाग्रचित कीजिएगा और यहाँ देखने की कोशिश करिएगा. एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, मुझे समझ आ जाएगी आप सब लोग मुझे देख रहे हैं. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे वो उसका आंसर स्क्रीन पे है. टुडे माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट बिगिन विद अ चैप्टर नंबर. कैन यू प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स द नेम, द नंबर ऑफ द चैप्टर. अरे वाह क्या बात है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच मेरा बेटा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वेरी गुड. थैंक यू. ओके माय कैपिटल ए कैपिटल Z स्मॉल. Okay, my dear respected students, sorry, there is some interruption. That's why I'm saying something other than this. So this is a computer virus. Mera beta, I just want to interact with you regarding this topic, computer viruses. सबसे पहले ना आप chat box में yes or no type करिए. Those facing computer virus, कभी भी आप लोगों ने अगर computer virus कभी भी face किया है, anytime. So can you please type in a chat box yes or no? Jasmilan is saying no, sir. Tushar saying yes. Prakriti, no. Very good. Parinika, no. Okay, yes. No, sir, no, yes. Okay, very good. It means there is a combination of no and yes. Why we are talking about this thing, that this is a computer virus, and I think so those who are still writing no, Mihir, thank you very much for your kind cooperation and typing no here. Thank you very much. God bless you. Those who are typing no here, maybe they are facing with a problem with the viruses, but they are not aware that this is a virus. मैं बिल्कुल simple terms में बताऊं, when my computer is working very slowly, when my computer is not responding, I'm just going to open a particular software, for example, MS Word, MS PowerPoint, and or some other applications or programs. When it takes more time as usual, or when some folders are creating automatically, we have not created that folders, and folders are automatically created in our computer, then maybe there is a virus in our
computer system. Maybe there is a virus in our computer system. Now, can you change your prediction that whether you are facing viruses or not? Again, type yes or no. And then I'm just begin with that. Yeah, Vanshika is typing yes here. Very good, Vanshika. All are requested to type. No problem with that. Very good. Be quick, be quick. अरे वाह, अब देखो कितने लोगों ने yes किया. क्यों किया? Because हमें पता ही नहीं था कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, that problem is happened due to a virus. So it's very, very, very important that we are supposed to know each and everything, because my dear respected students, we are a computer student. So kindly concentrate. I'm repeating my words. This is a theoretical chapter, but this is very, very, very important, and it helps you in your real life problems. Okay, kindly concentrate, dear students. I'm just moving towards the next slide here. Introduction. मेरा बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, and it's my humble request, whenever you are writing something on your as the answers, whether it is examination or whether on your notebooks, do by yourself. Write in your own words in spite of just copy and paste from your book. मेरे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. It says a computer virus is a software program. सबसे पहली चीज आपके ब्रेन में आनी चाहिए, the computer virus is a software. मेरा बेटा सबसे पहली चीज आपके ब्रेन के अंदर क्या आई, that when we talk about a virus, virus is basically a software that has the ability to make copies of itself. वो क्या कर सकता है, अपनी एक से ज्यादा कॉपी जनरेट कर सकता है, and to attach itself to other programs or files. उसको किसी और के साथ एसोसिएट कर सकता है. Now kindly concentrate. I'm just taking the example of COVID, the real life situation what we are facing right now. Beta, we are facing a COVID-19 situation here. And what is this? This is again a virus. But this is not a virus which interrelates with a computer, but this is a virus, my dear respected students, which basically relates with a biological virus. Biological means which is being related with the human के साथ related है. And in that case again, when we are going to discuss something, or we are just in touch with a person which is COVID positive, automatically the other person is also get infected by the same. So the same thing happens with the computer. So next thing, kindly concentrate, my dear respected students. It says, but very, very, very important thing. It says not all the time computer viruses are डिस्ट्रक्टिव, नुकसान पहुंचा. हर एक बार कंप्यूटर वायरस जो है वो नुकसान, हर एक तरीके का वायरस जो है वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता. Some are not going to interrupt or not going to disturb your normal functioning of your computer, but maybe some or the other are destructive in nature. हो सकता है कुछ जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो नेचर में, बट ऐसा भी है कि कुछ डिस्ट्रक्टिव ना भी हो. मेरे बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. नाउ दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इट सेज दैट अ स्टार्टअप एरिया. मेरा बेटा अब वायरस कहाँ कहाँ आते हैं हम इलेबोरेट भी करेंगे, बट लिटिल बिट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. इट सेज दैट दिस इज अ स्टार्टअप एरिया. स्टार्टअप एरिया सर ब्रैकेट में आपने लिख दिया नीचे बूट रिकॉर्ड. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर boot record? Sir, boot record means, मेरे बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुनना. Boot record means your operating system is supposed to be installed on your hard disk. This is your secondary storage. It says the part of your hard disk where the operating system is being stored is to be called as a boot record. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो एक बार yes टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में. Very good. जिनको मेरी बात समझ आई हो, they are requested to type yes in a chat box. Again, I am repeating, boot record is a place in a hard disk where the operating system is being stored, and when some virus is being infected that particular area, that is to be called as a boot virus. मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ. सिमरन मैंने दोबारा रिपीट किया आपके लिए. I am repeating that the area within your hard disk for storing the operating system, for example, Windows 7, Windows 8, Windows 10, and you are very glad to know that Windows 11 is also introduced by Microsoft. It means
when somebody is going to ask you that which one is the latest version of Windows, so you are going to tell them that Windows 11 in spite of Windows 10. जिनको पता था ये पहले, और जिनको पहले पता था वो यस टाइप करिएगा, और जिनको नहीं पता था वो थम्स अप करिएगा वहां पे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेबल फाइल। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जीक्यूटेबल फाइल? यार मैं अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के चला जाऊंगा ना तो आप मुझसे बहुत सारा गुस्सा करेंगे, आप बोलेंगे सर मुझे पता था पर आपको ना एक प्रैक्टिकल तरीके से बताना चाहिए था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीचर इज गोइंग टू टीच विद द हेल्प ऑफ अ practical demonstration. Okay, no problem with that. I'm just going to open my downloads portion. I'm just going to open here on my screen. This is a download. ये मैंने आप ही के लिए डाउनलोड किया था, ये एक सॉफ्टवेयर दैट इज AnyDesk, which is used for using our computers from a remote location. So what we can do here, how this is to be considered as a exe or executable file. So we can right click here on that particular and click on the properties here, and this is the type of the file. Beta yahan likha type of the file, and it says that this is a application. ये एक application है, that is a application, and the extension for that is .exe. This is to be considered as a एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे आप देखेंगे ना, ये देखिए अभी ये जो आपका पीडीएफ, आपको ये सबको पता है कि पीडीएफ है, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट क्लिक एंड ओपन दैट। इट सेज Adobe Acrobat document, that is a .pdf. इसकी एक्सटेंशन क्या है? पीडीएफ। बट इन दैट केस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AnyDesk, बिकॉज दिस इज अ सॉफ्टवेयर, इट सेज दैट आई एम अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। जितने लोगों को, मेरे बच्चों को मेरी बात ये समझ आ गई हो, वो प्लीज मुझे यस और नो में आंसर करें चैट बॉक्स में। वेरी गुड, 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 वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है। वंशिका इज सेइंग नो ओनली, आई थिंक सो। वंशिका, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बीन, मेरा बेटा, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, दिस इज द सॉफ्टवेयर having an extension that particular is to be called as a .exe, executable file, that is to be called as a executable file. Thank you very much, Mihir, for पार्टिसिपेशन, हर्षबीर, हेजल, मेनी मोर। मेरे को, मैं नाम लूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिर कई लोग ये बोल देते हैं कि यार कवल जी सर हमारा नाम तो लेते ही नहीं है। मेरी बेटी भी है, वो भी कहती है कि हमारे टीचर्स कई बार हमारा नाम नहीं लेते, तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, क्या करें, वो भी आप एक एक का नाम लेकर। ओके, देखिएगा जरा, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू? मेरे को चैट बॉक्स में टाइप करिए अगर आपको जो भी एक लाइन याद आ रही है इसके बारे में। What does a computer virus do? कंप्यूटर वायरस क्या कर सकता है आपके कंप्यूटर के साथ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्लो डाउन, वेरी गुड। वंशिका ने सबसे पहले लिखा। लॉस ऑफ डाटा, प्रत्युष ने लिखा। प्रत्युष, थैंक यू। स्लो, हार्म टू द डाटा, इफेक्ट द हार्ड डिस्क, द कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड। वेरी गुड यार, इसका मतलब ये रिया, स्लो डाउन द सिस्टम, इसका मतलब ये है द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग वेरी 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 केयरफुली। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। काइंडली कंसंट्रेट नाउ। The point says here, my dear respected students, the points will be said. First point, a virus tries to take control of the computer system it has infected. सबसे पहले वो क्या करता है, क्या क्या कर सकता है, क्या करता नहीं है, क्या क्या कर सकता है, वो आपके सिस्टम का कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा, and you are unable to use your computer in a very convenient way which you are supposed to do previously. आप इससे पहले उसको बड़े साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से प्रयोग कर रहे थे, बट अब क्योंकि वो वायरस आ गया, you are unable to do the same. Second point, it makes copies of itself, वो अपनी कॉपीज जनरेट करेगा to harm your computer या harm your task, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपनी अपनी कॉपीज जो है वो जो है जनरेट करता जाएगा। थर्ड पॉइंट सेज वायरस कैन आल्सो इन्फेक्ट न्यू फाइल्स क्रिएटेड ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। जब भी आप कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, कुछ भी आप अपने सिस्टम पे बनाओगे तो वो उसको डिस्टर्ब करने की, कई बार हमने देखा है ना हमारे सिस्टम में देयर इज ऑटोमेटिकली द सम शॉर्टकट कीज आर सपोज्ड टू बी क्रिएटेड इन आवर कंप्यूटर। सो व्हाट दे डू, दे जस्ट कन्वर्ट आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टकट एंड दे जस्ट इरेज और दे डू समथिंग which is not required with our data here. Okay, fourth point says
damage content of a pen drive. Again, I am repeating this thing. This is very harmful for use. This one is very harmful to use. For example, pen drives. There is no need to use pen drives nowadays because we having a Google Drives, we having a cloud services. Whatever you want to send from your computer to your friend or some other person, you can directly send the link of that, upload that into a Google Drive and send the link in spite of providing that particular data in a pen drive. Why so? Because pen drive is a very easy way to get infected. इन्फेक्ट होने का सबसे आसान तरीका है पेन ड्राइव, जो आप फटाफट कहते हो कि गेम है, देना यार गेम, फटाफट हम लोग करके और उसको अपने सिस्टम में लगाते हैं एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर दैट आवर सिस्टम इज स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, आवर सिस्टम इज स्लो डाउन. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग आफ्टर परफॉर्मिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स. इस स्लाइड तक मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आ गई है वो मुझे यस और नो में आंसर करते हैं फटाफट फटाफट. मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स की तरफ. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू वेरी मच. सब लोग यस टाइप कर रहे हैं. वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. जैसे आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन करते हैं ना अच्छे तरीके से, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एग्जाम्स में भी उसी तरीके का बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया करें. इट सेज now it says what a virus can do. यार अब तो ये बताने वाली कोई बात ही नहीं है what a virus can do, पर फिर भी चलो हम बता देते हैं कि what a virus can do. So I'm just going to display that content. अब आप लोगों को, काफी लोगों को आइडिया हो गया होगा. It can infect executable program files. Executable program file. अच्छा यार एक बात पूछूं, चैट बॉक्स में डालना, what is the extension of executable? What is the extension of executable? Aryan, I think so. Maybe there is an internet issue at your end because my voice is audible to all. That's why they are responding. All are responding in a chat box. That's why. Okay, very good. Great, great, great. .exe. Very good. Thank you very much. Thank you. Next point it says. Next point. अब देखो यहाँ पे कम मेरे लिए elaborate करने वाला, आपके लिए देखने वाला है. It can infect hard disk called boot record. अच्छा मैं क्वेश्चन भी पूछता जा रहा हूँ साथ के साथ. The dash is stored in a boot records. मैंने अभी बताया था, आपको डिस्कस किया था. Dash is record in a that dash is stored in a boot records. क्या स्टोर होता है boot record? जो आपका very good. रिया, हार्ड डिस्क का पार्ट तो है boot record, पर अरे वाह, जय आदित्य एंड जिया, मेरे बच्चों ने लिखा OS ऑपरेटिंग सिस्टम. वेरी गुड. सिर्फ अभी तक मेरे पास जो करेक्ट आंसर आया है वो हिया का करेक्ट आंसर है और जय आदित्य भारद्वाज जी का है. दे आर सेइंग दैट दिस इज boot record storing operating system. Very good, very good. Thank you very much, Jay Aditya and Hiya Bhardwaj ji. Thank you very much, Jia Bhardwaj. Hiya. It can infect the files that are attached to your email messages. अब मेरे बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना. What happened here when we are sending some emails, or my very humble request is there. Very humble request is there. When we are just going to open some unauthentic websites which is not very appropriate, जो अच्छी नहीं है और appropriate नहीं है, when we are opening such kind of websites, they just give us a pop-ups, some pop-ups. आप इतने करोड़ रुपए जीत गए, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये 500 रुपीज की चीज आपको 50 रुपीज में अवेलेबल है. And what we can do, we just click on that particular, we can just simply click on that, or we are expecting or we are not expecting unnecessary emails which is to be called as a spam. जो unwanted emails हैं वो मुझे मेरे inbox में आती जा रही हैं और मैं फटाफट वहां पे क्लिक करके देख रहा हूँ, sir you have won $50 million, click on this website and enter your bank detail. तो जैसे ही मैं वहां पे क्लिक करूंगा, so what happen, our system is going to be infected because these are not the genuine emails. And if you find any kind of such email without reading, kindly delete that particular email. There is no need to read the content of that particular email. In fact, files can spread from one computer to another. वो उस चली जाएंगी, कैसे जाएंगी? With the help of email, with the help of pen drive. This can travel from one computer to another. यहाँ तक चली जाएंगी. Okay. Now, what a virus cannot do. Can anybody having any idea कि वायरस ये चीज तो नहीं कर पाएगा, वायरस ये चीज तो नहीं कर पाएगा.
If you have any kind of clue, kindly type in a chat box. मैं वेट करूंगा 1 मिनट के लिए, and after that I am just going to discuss the concept. मैं फटाफट आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा. वायरस किसको प्रभावित नहीं कर सकता? व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू. हर्षवीर ने कुछ टाइप तो दिया है, इट कैन नॉट एच किया है. अरे वाह, हर्षवीर के पास बुक भी है मुझे लग रहा है. वेरी गुड. परिणिका के पास भी बुक है. वेरी गुड. मुझे पता है, अब मुझे पता लग चुका है कि इन दोनों के पास बुक है. हर्षवीर और परिणिका मुझे यस टाइप करिए चैट बॉक्स में अगर आपके पास बुक है, क्योंकि जो अटेंटिव स्टूडेंट्स हैं, दूरास अटेंटिव, they having books with them and they are very minutely they are reading the content from book as well, and they are just finding those things which is being discussed by Kavalji sir. It cannot harm the secured file. Okay, thank you very much. It cannot spread without programming. Very good. Okay, thank you very much. Okay, now kindly concentrate. The one thing which is neither being infected by a virus is hardware of your computer. मेरे बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन लेना. हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो माउस है, हार्डवेयर है, उसको वो कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. आपका कीबोर्ड है, उसको वो कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. उसके कीबोर्ड के बाद आपका जो मॉनिटर है, उसको वो कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. आपके सीपीयू बॉक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीपीयू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोसेसर, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉक्स. जो आयरन का बॉक्स है आपका, जो आपका मेटल का बॉक्स है, दे आर नेवर इन्फेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ वायरस. सो काइंडली कंसंट्रेट हियर. इट सेज इट कैन नॉट इन्फेक्ट सीडी रोम्स. मेरा बेटा मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा आप लोगों को, अगर आप फुल फॉर्म टाइप कर दें सीडी रोम की फुल फॉर्म. पहले सीडी की टाइप करिए, चलिए फिर हम देखते हैं. एक बार चैट बॉक्स में टाइप करिए. वेरी गुड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? वेरी गुड. अरे वाह गुरसिमरन, थैंक यू वेरी मच. कॉम्पैक्ट डिस्क. अरे वाह गुरसिमरन, जतिन, सविन्या, जानवी, परिणिका, सिद्धिका, वानी, सिमरन. वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मिहिर. अरे वाह, मिहिर भी आ गया. ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम नाउ? You all know that what is the full form of CD. Now tell me the full form of ROM. ROM. That is a ROM. ROM. अरे वाह जसमिलन, क्या बात है यार. जसमिलन, रीड ओनली मेमोरी. वानी is also typing read only. दिव्यांश, परी खुराना जी, सिमरन जी, अरे वाह क्या बात है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू Ashleen, very good, great. Okay, the next thing is kindly concentrate on screen as well. It cannot infect computer hardware such as a monitor, such as a keyboard, and we can also consider mouse here, and we can consider all kind of hardware is not going to be infected. But remember this thing, for make workable, for example, if we talk about a keyboard, to make keyboard workable, one driver is required. जैसे घर पे हमें कार हो और एक ड्राइवर चाहिए ना कार चलाने के लिए, तो वो ड्राइवर जो है आपके कीबोर्ड का, वो इन्फेक्टेड हो सकता है. बट हार्डवेयर इज नाइदर गोइंग टू बी इन्फेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ वायरस हियर. वेरी गुड, ग्रेट. नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चा, वार्निंग मैसेजेस. वार्निंग मैसेजेस. अब मेरे बेटा वार्निंग मैसेज आपको आती है व्हेन वेरी इंटेंसिवली योर कंप्यूटर इज गेट इन्फेक्टेड. आपका कंप्यूटर जब बहुत इंटेंसिवली जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, देन इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्निंग मैसेजेस. प्लीज यहाँ देखिएगा. फर्स्ट मैंने लिखा है स्क्रीन डिस्टॉर्शन. स्क्रीन डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन का मतलब कि स्क्रीन पे जो दिखना है वो आपको बंद हो जाए. मॉनिटर इज परफेक्ट, मॉनिटर इज वर्किंग वेरी परफेक्टली, बट जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है विच इज नॉट वेरी मच विजिबल. ओके, the content of the screen is not going to be displayed on the screen. So kindly check this demonstration. I have downloaded some images from a Google and displaying on the screen. It says screen distortion. Very good, such kind of thing. या ये देखिए बिल्कुल वो बाकी नीचे सब कुछ नजर आ रहा है हमें टास्क बार में, बट जो स्क्रीन है वो हमें परफेक्टली नजर नहीं आ रही. This is to be called as a screen distortion. Very good.
Next thing, what happened in, and it is a part of a warning signal. It says characters not appearing. Beta, many this again I downloaded from our internet. Maybe this is not very much clear to you, but here it is. This is a demonstration that characters are displaying in such a way or in such a language that which is not is being understand by you. आप उसको understand ही नहीं कर पाएंगे that what is being displayed on the screen, and in that case you are unable to respond. आप unable होंगे, you are not able to respond in a perfect way that how it is going to be performed. Okay, next, again there is I think so this is the content which is being displayed on the screen, that it says that content is not visible. And why this happened, because this is happening with the help of a, because there is a virus attacked on your computer. There is a virus attacked on your computer. And my dear respected students, I want to include one thing here very forcefully, that big organization like Google, like Microsoft, like Facebook, like Twitter, they all are facing such kind of immense viruses. And you can just Google it on your system. You can Google it there, and you find that how frequently these organizations are facing such kind of viruses. They are facing such kind of viruses, and they just having persons enrolled for taking care of such kind of activities which disturb their normal functioning. And Ankit Fadia, one of the renowned name in India is Ankit Fadia, which is to be called as the ethical hackers. Ethical means those persons which are performing hacking in a positive way, to in a positive way. Big organizations having a profile, a job profile hai, which is to be called as the ethical hackers. So they do hacking in a positive way. Warning messages. अब जरा ध्यान से देखते जाइएगा. कंप्यूटर क्या हो गया, स्लोअर हो गया. एप्लीकेशन इट टेक्स लॉन्गर टू लोड. हम MS वर्ड ओपन कर रहे हैं, 5 मिनट MS वर्ड ओपन नहीं हो रहा. सो it makes sense that there is a virus. Unusual error messages, some unusual messages is going to be displayed on the screen. Change in a file size, new files created automatically, the computer stop responding and the computer restart on its own. हम बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं and automatically computer is being restart. अच्छा एक चीज दिखाऊं, even I having a virus on my computer. Those who want to view that virus, kindly type yes in a chat box please. Those who want to view that particular virus on my system. जैसे मैंने आपको बोला था ना कि they just created folders as well on the system, on your system, and we are unable to delete that folders, and nothing is there in that folder because, but the folder will be there, and it reflects that there will be an error here. So kindly concentrate. I'm just pressing Ctrl+E to open my computer and local disk here. Okay, look here. These are the very appropriate folders which is here, but this is CFR backup, and this is the text CFR backup. Or now what I'm going to do here, I'm just going to click here. This is a backup. Okay, I'm just going to click here. It says you do not currently have permission to access this folder. I'm saying okay. So can I click on the continue? Yes, I'm just going to click on the continue. Again, it says you have been denied permission to access this folder. आप इसको नहीं कर सकते, इसको access ही नहीं कर सकते इस folder को. And if you want to delete that, you may face some such kind of problems here. Okay, one more thing I just want to discuss with you. I'm just going to Window+D for watching my desktop here, and I'm just going to type %temp %. This is a clue for you. मेरे को लगता है मैंने वो परसेंटेज मेरा टाइप नहीं हुआ था ना. No issues with that. I'm just going to type here %temp. अब जरा ध्यान से करूंगा ना. हाँ ठीक है. Temporary files, because I want to delete a temporary files from my computer. So what we can do, these are the temporary files which unnecessary taking space of my hard disk. I'm just going to delete that. Okay, अब ये देखो जरा ध्यान से. ये क्या कहता है? The action cannot be completed because the file is opening in Window Explorer. I'm just going to skip that.
these are the files which may have error, because all the times when we want to delete that particular, they display some message and I am unable to delete those particular files. So this is a kind of a virus which is there in the कंप्यूटर. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो यस नो में टाइप कर दीजिएगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यस और नो, यस और नो, यस और नो. अरे नो भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं. यस सर. अरे वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा ये टेम्प एम्परसेंट, टेम्प एम्परसेंट वाला आप भी ट्राई करना. और जो अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स है ना, यू आर सपोज टू डिलीट फ्रॉम योर कंप्यूटर्स. ओके, वेरी गुड, great. Now we are just going to move towards a next part here. Did you know, which is there on the page number 48, I think so. Kindly concentrate on your books if you have, but I think so you have it required that you have computer books with you. Did you know? Very good. This is the name of that person, Richard Skrenta, and this is the person. अब देखो फायदा क्या हुआ. Some people are saying that online classes are not very good, sir, but I am saying that these classes are very, very good. Why so? Because in your normal classes I am unable to display that particular thing. I am not in the habit to display such kind of presentations on screen while discussing these chapters. So here Richard Skrenta, I am just going to display the image of that person, and what this person do, wrote the computer virus, and virus, the name of that virus is Elk Cloner, and it is being originated and is being created in 1981. And this is the virus, my dear respected students. This is the virus which is being displayed. A poem only, one poem is going to be displayed on the screen only. One poem is going to be displayed on the screen only, and this is the working of that virus. So in first slide I have mentioned that some viruses are not going to interrupt the working of your computer. So maybe this is the part, of those viruses which not going to affect the working of your computer. अच्छा, आप जरा ध्यान से सुनिएगा. वेरी गुड. अब मैं एक आधा क्वेश्चन पूछ लूं. एक आधा क्वेश्चन पूछ लूं. चलिए जी, आइएगा. चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, चैट बॉक्स में. माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, operating system is stored in dash part of your hard disk. Operating system is stored in dash part of your hard disk. अरे वाह. सबसे पहले वंशिका, फिर जतिन, फिर गुरसिमरन, फिर हर्षवीर, फिर प्रणव, फिर जयादित्य और जिया, फिर हेजल. वेरी गुड. हेजल तक तो आ गए मेरे पास. दैट इज अ बूट रिकॉर्ड. फिर जानवी. वेरी गुड. जानवी घेरा जी. फिर कुशाल जी. कुशाल, थैंक यू, थम्स अप. क्लास में नहीं मेरे से बात करता था, पर यहाँ तो करता है. सविन्या, जसमिलन, सिमरन, परिनिका. वेरी गुड, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब नाउ स्टॉप टाइपिंग इन अ चैट बॉक्स. नाउ next question, my dear respected student. Next question, it says, next question is says Elk cloner is a virus which is being created by, created or wrote by, or created by, we can call it as, by dash person. You are just going to tell me the name of that person. You are just going to tell me the name of that. अरे वाह, क्या बात है. अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा. I'm not going to take. बहुत सारे लोगों का आ गया भाई. Very good, very good, Richard. Very good, very good, very good. Thank you very much. Thank you. God bless you. Okay. One more thing, but we have discussed very extensively. On your book, that is on page number 47, they says, did you know Dash was the first known cell phone virus. It appears in March 2005. अब जरा टाइप करिए. I am also going to check those having books with them. अरे वाह. हर्षवीर, तेरे पास बुक है यार, पक्का. सविन्या के पास बुक है, पक्का. परिणिका, प्रत्युष, गुरसिमरन, खुशाल. वेरी गुड. दैट इज अब मैंने नाम नहीं लिया, देख लो. अब जिनके पास बुक है उनके आंसर आ रहे हैं. जतिन, हेजल. वेरी गुड, वेरी गुड. परी खुराना जी. परी खुराना, सर प्लीज टेल, सर प्लीज रिपीट. मैंने रिपीट करना. आंसर इज कॉमन वॉरियर ए. Very good. Which is there, Pari, which is there on the page number 47. And did you know Dash was the first known cell phone virus? It appears in March 2005. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है.
Okay, thank you very much for your kind participation. You all are very, very, very good students and participating in a very, very effective way. How does the computer virus spread? अच्छा, आप मुझे बताने की जरूरत है, चैट बॉक्स में डालना जरा, मैं फिर पढ़ूंगा थियोरेटिकल। अब मुझे ये देखना है कि मेरे बच्चों को किनको मेरी बात समझ आई है। हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस कैन स्प्रेड? कैसे स्प्रेड हो सकता है? वेरी गुड, पेन ड्राइव। चितगुन थैंक यू। पेन ड्राइव, फिर पेन ड्राइव, कुछ और भी आओ ना। टू पेन ड्राइव्स, वेरी गुड। ई से भी स्टार्ट होता है कुछ, ई से अभी किया था हम लोगों ने, ई। अरे वाह वेरी गुड। हेजल थैंक यू, कुशाल थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ वेरी इफेक्टिव वे, काइंडली कंसंट्रेट। Computer viruses spread from one computer to another computer. How they can transfer from one computer to another? They can transfer with the help of emails, that is electronic mails. They can transfer with the help of pen drives. They can transfer with the help of portable hard disk as well. Because nowadays we are in habit to use a portable. Portable means which can be taken from one place to another. Those kind of hard disk can also be used for interrupting the working of your computer by transferring the virus. And here it is, type of common viruses, computer viruses. Very good. Now we are just begin the type of computer viruses. And here it is, my dear respected students. First we can discuss. I have 1.36 duration, 1 minute 36 seconds. So this is a very, very, very attractive image here. The first is a program virus. अच्छा, मेरी बात सुन लेना ध्यान से. Kindly concentrate, my respected students. Program viruses infects program files. मेरा बेटा, program files means the files which is to be considered as a software, or very, very, very commonly which is to be considered as a .exe file. मेरा बेटा, जो अभी हमने डिस्कस किया, which is to be called as a executable files. यहाँ पे लिखा है .sys, यहाँ पे लिखा है, ये देखिएगा मेरा पुत्र, यहाँ पे लिखा है .sys files, which is a system file, and this is a DLL. लिख लीजिएगा चाहे, DLL stands for dynamic link library, और यहाँ पे लिखा हुआ OVL, overlay files, and this is the extension .scr for a screensaver. These are used for a स्क्रीन सेवर्स, जो आपके विंडोज में स्क्रीन सेवर आते हैं ना, उनके लिए जो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ स्क्रीन सेवर एक्सटेंशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, प्रोग्राम फाइल्स आर अट्रैक्टिव टारगेट्स फॉर computer viruses. बहुत आसानी से. Why so? Because you all are very fond of using games, and you are just going to discuss things with your friends that you have that game. Yes, I have in my pen drive, and you can just transfer that program to your friend, and then they just insert that pen